Very good afternoon, my dear colleagues. Today we are here with third interactive live session on Swam Parba Channel 20, which is part of National Education Policy Professional Development Program, and we all know that is the fourth batch. And today we shall be discussing one of the major topic or theme of the National Education Policy, which is NEP 2020, Motivated and Energized Faculty. And to discuss this theme, we have with us a very prominent expert from this field, Professor Madhu Parhar. Professor Madhu Parhar is a professor in distance education, presently working with Staff Training and Research Institute of Distance Education, IGNOU. I would invite Professor Madhu Parhar to please present the and share the theme with the participants. Thank you, Dr. Ali. Dr. Ali, my colleague in STRIDE IGNOU. Good afternoon, my fellow teacher colleagues from various universities and colleges who are here watching live on Swam Prabha, also watching on the YouTube this program, 1 hour program on Swam Prabha on NEP, and today's topic is Motivated, Energized and Capable Faculty. So friends, I'm sure in the last 2 days, and since you have registered for this short-term faculty development, professional development program on NEP, you must have read the NEP document by now. आप सबको पता होगा कि NEP डॉक्यूमेंट जो है वो 20 भाषा में है, इंटरनेट पे अवेलेबल है. सो आई एम श्योर यू मस्ट हैव रेड either in English or in Hindi or in your regional language by this time. Also, you must have read the modules which are posted on SWAM. You must have watched videos, maybe not all, but few videos which are also posted on SWAM. Now, today what we are going to learn is a very important aspect, what is written in National Education Policy, that is motivated, energized and capable faculty. If I remember, this theme is on page 49 of the policy document, but still make sure that I'm saying the right page number. So all of you, I know you will say that we teachers, we are motivated, all of us, we are energized and we are capable. 100% correct that all these three important qualities, the faculties in the higher education system we have. But now let's see what the National Education Policy, it talks about. So there are certain recommendations given in the policy document which begins with the first para under this theme says that what is the success of higher education institutions. So it says, and I'm just saying what policy document it is written there, that success of any higher education institution, whether it is a university or it is a college, it depends upon two main things. There are several other things, but the two most important things are A, the quality of the teachers, and B, the engagement of the teachers. Quality, all of you know. Engagement in the university of the teachers, engagement with the students, engagement with the other stakeholders. So the policy document says that our success जो है हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की, वो दो चीज़ पे निर्भर करती है.
again, the policy talks about that there are several initiatives since, let's say, independence, since earlier policy documents. There have been past initiatives which have been done, which have been written by Government of India and in other policy documents on teachers. So the first very important point which this document talks about is recruitment. आप सबको पता है कि हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में रिक्रूटमेंट ऑफ टीचर्स का एक प्रोसेस है and it is a well established process. I need not explain it because all of you know. And over a period of time वो बदला है बहुत ज़्यादा recruitment processes. अब तो इन प्रेजेंट डे जब टेक्नोलॉजी इतनी आ गई है वो तो सब ऑनलाइन होने लग पड़ा है. आप फॉर्म भी ऑनलाइन भरेंगे और कई दफ़ा और ऑनलाइन आपका इंटरव्यू भी हो रहा है. अब चेंज हो गया, फेस टू फेस कोविड के बाद शुरू हो गया है. बट द पास्ट इनिशिएटिव्स हैव बीन, देयर हैज़ बीन अ वेरी proper recruitment process created by University Grants Commission. And not only the University Grants Commission, even the individual universities or even the colleges, they have their internal processes of recruitment. Second important point, again, if you will see in the document, what are the past initiatives? It has talked about the career progression. Very important point they have said. हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में हमको पता है हमारा अपॉइंटमेंट होता है एज ए लेक्चरर, असिस्टेंट प्रोफेसर, वी गो टू ए रीडर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड देन वी बिकम ए प्रोफेसर. सो देयर इज अ कैरियर प्रोग्रेशन इन well laid in by the UGC or even by the institutions. So those have been the initiatives. Change हो रहा है over the period of time. So if I remember, अब तो आता है सीनियर स्केल भी आ गया, सीनियर स्केल लेक्चरर आ गया, सीनियर स्केल रीडर आ गया. So all rules have been changing, but it is a very clear progression given by the UGC or by the institution. Third initiative the document has talked about is that the teachers are equally represented in the appointments. Very important point. आप सबको पता होगा कि जब advertisement होता है, so there is advertisement for general categories, there is advertisement for special disadvantaged group also. So सबको equal representation मिला है. Next point is compensation. Again, if I see myself have experience of more than 20 years in higher education institution, जब हम lecturer थे 30,000 रुपया मिलता था. Over a period, और आजकल आप देखेंगे the salaries have become so good, so it's clear, and those specifically those who are permanent faculty members in the public universities. So the compensation also has improved over a period of time, and again it is a well established within the university, within the colleges and by the University Grants Commission. Last point which the policy document talks about under this theme is what initiative it has been taken, the professional development opportunities. तो अगर आप फर्स्ट पॉलिसी से देखें या कमीशन से देखें या यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के डॉक्यूमेंट्स देखें, इस पॉइंट पर प्रोफेशनल डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ हायर एजुकेशन टीचर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया है. So whether professional development is in the field of pedagogy or professional development is in the field of the own discipline, teachers their own discipline, lots of emphasis has been given, and all of you know, you must have attended, and one of the important point is what you are attending, the NEP training program, that is short term program. So professional development opportunities also have been given to the higher education teachers in the past.
Now, what are the initiatives proposed in this document? ये तो पास था, अब document क्या कह रहा है? Let's learn little bit about that. So the first and the foremost and the very important point which the policy document talks about is A, infrastructure and facilities of higher education institutions, and second is classroom should have access to technology. Now let's learn and see what are these 2 points which has been emphasized. So the document, again I am repeating the same thing, document says कि हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, चाहे वो यूनिवर्सिटी हो चाहे वो कॉलेज हो, क्लासरूम्स हैं, ड्रिंकिंग वाटर है, टॉयलेट फैसिलिटीज़ हैं, प्लेग्राउंड्स हैं, लेक्चर रूम्स हैं, labs हैं, and so on and so forth. So in higher education institutions the infrastructure facilities are well established. Maybe किसी कॉलेज में या किसी यूनिवर्सिटी में इतनी नहीं होंगी up to the mark, but majority of they are, and especially if we talk about central universities, we talk about state universities, we talk about private universities, these infrastructures and facilities are in place. हो सकता है हाँ कहीं पे रूरल एरिया में कोई कॉलेज हो तो उसमें अच्छी ना हो फैसिलिटी, मे बी लैब ना हो लेट्स से, और स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ ना हो, बट देयर आर देयर. But the second important point which it talks about is that classroom should have access to technology. इसके ऊपर ध्यान देने वाली बात है. कई यूनिवर्सिटीज़ होंगी जहाँ पे क्लासरूम्स में लेट्स से प्रोजेक्टर होगा, कंप्यूटर टीचर के पास कंप्यूटर होगा, वो पावर पॉइंट से वो प्रेजेंट करती होगी या करता होगा. सो टीचर्स मस्ट बी यूजिंग टेक्नोलॉजी. कंप्यूटर लैब्स हैं, बट दिस डॉक्यूमेंट सेज दैट यू नीड टू, द टेक्नोलॉजी शुड बी देयर, but it needs to be integrated into the teaching learning process. एक एक्सेस हो गया कि हमारे पास है कि नहीं है. अगेन आई विल रिपीट, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में हो भी सकता है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में नहीं भी हो सकता है. दैट इज़ पॉइंट वन. बट इम्पॉर्टेंट इज एक्सेस टू टेक्नोलॉजी हो गया, पर उसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे ये दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है. मेरे पास स्वयं प्रभा भी है, मेरे पास स्वयं भी है. सी, इट इज़ बीइंग इंटीग्रेटेड इनटू दिस ट्रेनिंग प्रोग्राम. दैट्स व्हाट the policy document says. Now you can always say, some of you might say, पैसा कहाँ से आएगा टेक्नोलॉजी लेने के लिए? बहुत सारी स्कीम्स हैं where government of India is giving. Second important point is, all of us, can the universities or private colleges or private universities can collect some fund and procure these technologies. मैं अपना एक एग्जाम्पल दे सकती हूँ. जब मैं बीएड कर रही थी एक कॉलेज से, तो हमारे पास ना प्रोजेक्टर था, वो आज से शायद 10-15 साल पहले की बात थी. नीदर वी हैड ए प्रोजेक्टर नॉट वी हैड ए लैपटॉप एट दैट टाइम, बट इट वॉज देयर इन द मार्केट. ऐसा नहीं कि मार्केट में नहीं था. वी हैड ओनली ब्लैक बोर्ड. So what we decided, all the students, there were 60 students, that let's contribute ourselves and let's buy a projector in next 6 months. हमने 6 महीने में प्रोजेक्टर ले लिया. उसके 6 महीने बाद थोड़ा सा पैसा इकट्ठा किया, कहीं से हमने फंड लिया, डोनेशन किसी ने दिया, हमारे पास एक लैपटॉप आ गया. This is what it is required by all of you, those who don't have. Those who have, उनका तो ठीक है, उनको तो इंटीग्रेट करना है कैसे, उसके लिए आपको ट्रेनिंग की ज़रूरत है. बट एक्सेस कैसे करना है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. कोविड में देखा कि स्टूडेंट्स के पास एक्सेस नहीं था, टीचर्स के पास एक्सेस नहीं था, बट स्टिल ऑल ऑफ अस वी मैनेज्ड somehow transacting our teaching during the COVID period. So this is an important point which the document talks about. Second initiative which the document says is, these are the 3 important things. 1, what teachers should do. Teachers should create in the classroom a time for interaction.
I'm sure all of you will agree to it. To me, majority of us, we teachers, I am also teacher, Dr. Ali is also teacher. अभी हम ओपन यूनिवर्सिटी में, पर हम सब फॉर्मल यूनिवर्सिटी में थे, हम वहीं से आए हैं. आप सब भी फॉर्मल यूनिवर्सिटी में से हैं या कुछ ओपन यूनिवर्सिटी से भी हो सकते हैं. So the emphasis in document, it talks about that teachers need to have time for interaction. Interaction with the students in the classroom or even in the counseling session. Abhi kya hai? Majority of the time it is just a one-way communication. Teacher aati hai ya aata hai, or teacher speaks for 45 minutes or 1 hour and then goes away. There is no time for interacting with the students. This is what the policy document says कि हम सबको teachers को ये काम करना है. स्टूडेंट्स के साथ जितना ज़्यादा आप इंटरैक्ट करेंगे, एनवायरनमेंट के साथ जितना आप इंटरैक्ट करेंगे, द लर्निंग विल बी मच मोर इफेक्टिव. सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इट टॉक्स अबाउट इज टीचर्स को रिसर्च करना है. दे नीड टू कंडक्ट रिसर्च. अगर हम डेटा देखते हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द टीचर्स, उसका भी बहुत डेटा अवेलेबल है, पर अगर हम स्टूडेंट्स का डेटा देखें, आपको पता है ओनली 0.2% स्टूडेंट्स आर एनरोल्ड इन PhD प्रोग्राम इन हायर एजुकेशन. सो अगर हम कहें रिसर्च बहुत कम है, बट इफ वी टॉक अबाउट कि टीचर ने क्या रिसर्च किया, और भी कम होगा. मे बी साइंस टीचर्स करते होंगे रिसर्च, या IITs या IIMs या IISc वगैरह में रिसर्च होता होगा. जनरली इफ वी से इन फॉर्मल यूनिवर्सिटीज और इवन इन कॉलेजेस, रिसर्च इज अ वेरी वीक एरिया. तो पॉलिसी ने क्या कहा है कि टीचर्स नीड टू डू अ लॉट ऑफ रिसर्च. This research can be your individual research, this research can be a sponsored research. For example, ICSSR fund करता है, UGC grant देता है, there are other agencies, but we the teachers need to come out of our teaching initiative only and conduct research. और research बहुत बड़ी होने की कोई ज़रूरत नहीं है. We can do action research. Action research में आपका it will not cost you anything. You doesn't need a lot of data collection. You doesn't need a lot of data tools and so on. So you can conduct research. This is what it is said in the document. Third important point which document talks about is यूनिवर्सिटी एक्टिविटीज में टीचर्स को पार्टिसिपेट करना है. इट मीन्स व्हाट आर द अदर एक्टिविटीज. आप कहेंगे हमने रिसर्च कर लिया, वी हैव डन इंटरैक्शन, हमने टीचिंग कर ली, एंड व्हाट आर द अदर एक्टिविटीज. ऑल ऑफ यू नो, ऑल ऑफ यू मस्ट बी डूइंग इट इन योर इंस्टीट्यूशंस. व्हाट आर दोज एक्टिविटीज. हमारी यूनिवर्सिटी में तो वी सेलिब्रेट 15th August, वी सेलिब्रेट आवर फाउंडेशन डे, वी सेलिब्रेट 26 January एंड सो ऑन, अदर एक्टिविटीज. So teachers need to participate in such activities. That's what it is written. आपकी यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में और बहुत सारा तरह की एक्टिविटीज़ होती होंगी, तो आपको खुद देखना है. And I'm sure all of you will introspect yourself that in which activities you are taking part. फॉर्मल सिस्टम में तो हमने देखा है बहुत को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं, ड्रामा है, थिएटर है, स्पोर्ट्स है एंड सो ऑन. एंड टीचर्स दे आप, इट्स नॉट ओनली कि स्पोर्ट्स टीचर जो है वो ही पार्टिसिपेट करेगा, other teachers are also actively participating. That's what we have seen. But you need to, the document says that we the teachers need to have much more activities. So this is the second initiative which the document talks about. The next, it says that we should give freedom to design own curriculum, that is freedom to the teachers to design own curriculum. अब आप लोग कहेंगे करिकुलम तो हमको मिलता है, हम कैसे डिज़ाइन करेंगे इसको, हमको UGC देता है या यूनिवर्सिटी देती है. Absolutely true. What teachers can do it?
You need to design your own curriculum, and that's what it says in the document, that within the given framework, UGC की वेबसाइट पे जाएंगे, बहुत सारे सब्जेक्ट्स का करिकुलम दिया हुआ है, यूनिवर्सिटी ने दिया हुआ है, बट यू कैन चेंज योर ओन करिकुलम. वो फ्रीडम मिलेगी अब आपको है वो फ्रीडम. और वो बहुत इम्पॉर्टेंट अब इसलिए हो गई है बिकॉज व्हेन वी टॉक अबाउट मल्टी डिसिप्लिनरी, तो मल्टी डिसिप्लिन में एक सपोज हमारे पास हिस्ट्री है, हम पढ़ रहे हैं, बीए हिस्ट्री कर रहे हैं हम, या बीए कॉमर्स कर रहे हैं हम, तो मैं अपना करिकुलम कैसे चेंज करूं बीए हिस्ट्री का? उसमें कुछ मैं सॉफ्ट स्किल्स प्रॉब्लम सॉल्विंग ले आऊं, या मैं उसमें म्यूजिक ले आऊं, या मैं उसमें पेंटिंग ले आऊं. दिस फ्रीडम द पॉलिसी डॉक्यूमेंट सेज दैट it will be given, it is given now, so that you own design, but it also says that within the given framework you have to do it. Second point which it talks about is that conduct innovative teaching and research. We have already discussed about research, but again it says that teachers need to conduct innovative teaching pedagogies. At the moment हम क्या कर रहे हैं? क्लासरूम में इट इज ओनली इंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच. टीचर जाती है या जाता है, लेक्चर दिया, कम बैक, मे बी थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर किया, एंड दैट्स इट. दिस इज नॉट इनोवेशन. पॉलिसी सेज अब हमको इनोवेशन करना है अपना टीचिंग मेथड्स में. यू कैन यूज ए कंस्ट्रक्टिविस्ट मेथड ऑफ टीचिंग लर्निंग, यू कैन यूज ए रिफ्लेक्टिव मेथड, यू कैन यूज let's say a problem solving, you can do any related such innovations in